Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be looking at a passage from Surah Al-i-Imran, to be precise, verses 130 to 136. And as we start studying these verses, you will clearly see that the objective of these verses, of course, is once again to make us better human beings, to make us realize that life is all about becoming and trying to become our best, to be high achievers, and at the same time, not just high achievers in our profession, in our own fields, but also high achievers as human beings. So, humanity is something that we have to understand. It lies at the basis of all religions. You cannot be a good Muslim or a good Christian or a good Jew unless you are a good human being. So, at the base of every religion lies this foundation of humanity that we have to actually really pay attention to. So, we start off our today's lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Believers, if in future also you want God's help, do not consume this interest doubling it many times over, and keep fearing God that you may prosper, and protect yourselves against the fire that has been prepared for the disbelievers, and remain obedient to God and His Messenger that you earn mercy, and run to advance to the forgiveness of your Lord and to paradise which is as vast as the heavens and the earth, prepared for the righteous who spend in all circumstances. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, whether they are in ease or in hardship, and even if they encounter any excesses from those upon whom they spend, they curb their anger. And then the verse goes on. It says, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. And these are the people who are thorough in their deeds, and God befriends those people who are thorough in their deeds. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. And such are they that if they commit a lewd act or do something evil to themselves, remember God and seek forgiveness for their sins. And who but God can forgive sins? And do not deliberately persist in what they have done. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. It is these who shall be rewarded with forgiveness from their Lord and with orchards beneath which streams will flow. They shall dwell there forever, and what a good reward this is from those who do righteous deeds. So we start off this passage with a very emphatic uh, advice and a very emphatic directive regarding the prohibition of interest. Interest, we all know, is something in which we charge over and above the lent amount, and hence it amounts to, actually, it does amount to extortion, it does amount to embezzlement. At the same time, it also is something immoral, because when you lend something, the purpose of lending in religion is to help people, and lending in some is not something that has to be used as a means of advantage and taking advantage over other people. So that is why it has been prohibited. And this restriction that you see, or the condition that you see, it says doubling it many times over, has often led many scholars and many Islamic economists to believe that perhaps this is compound interest that is being prohibited. Well, this is not the case precisely, because you see, at times the nature of something, in order to point out to the heinous nature of something, you tend to add certain adjectives to it so that you are able to understand how bad it is. It's much like saying that you are telling a lie, and that too in the mosque. So obviously, it doesn't mean that you can tell a lie outside the mosque. It just tells us that telling a lie in the mosque, telling a lie when you are in the sacred place, is something that should be avoided at all costs. And obviously, this is the same thing as telling us here that you are charging interest, and that too doubling it and tripling it many times over.
So it is clear that basically what is being prohibited here is all types of interest, and it might be I mean, worthwhile to note as well that today banking, the way it is based on, or it started with itself being deeply grounded in the institution of interest. But today, the way things are, a lot of things have changed, and banks have now become more like financing institutions, especially when they finance projects. And in this case, that lending, of course, is not cannot be classified as riba, because they are financing projects and earning anything over and above that in that financing. So they become sleeping partners. And any lending actually which is based on the principle of principal secured investment, which means that in this you say that if you have a profit, I'm going to charge you something, but if you are suffering through a loss or you have declared bankruptcy, then nothing will be charged from you. So if you look at this model, you'll find that today's banks are very close to this model. The other important thing that we have to understand here is that if you look at the Quran, you'll not find at a single place in the Quran the paying of interest to be prohibited. So at every instance in the Quran, at all occasions, on all occasions, there are 5 or 6 occasions on which interest is mentioned. You'll find that on all such occasions, what is mentioned is the charging of interest, but the paying of interest in an interest-based society is not prohibited anywhere in the Quran. And in fact, it is because of this that if a person, buys a house on mortgage, or buys a car on mortgage, or buys any big product on mortgage, that is absolutely fine, because in this case, you are not charging interest, you are paying interest. And over and above that, important thing also is the fact that interest does not, it does not figure in commodities, it figures in currency. So when you buy a house or when you buy a car, what you're doing is you're giving that money, and the extra money that you're paying, thinking that these are installments of interest that you're paying. They are not actually, if you look at the essence, they are not installments of interest. They are basically what we can say as installments of rent before you own that thing. So you're charging, or you're paying that rent on the thing that you have acquired. And precisely this has happened in many Islamic countries, or not many, at least some Islamic countries to be precise. In Malaysia, you'll find this model to be very practically rampant, and it says that it's a hire and purchase agreement between the bank and between the person who actually takes the money on or borrows the money on loan, and as long until the asset becomes the under the ownership of the person, he is basically giving those installments as rent for the use of that asset. So although interest is not our direct topic here, but I thought it was essential to point this out, that the nature of interest which is mentioned here by saying that la ta'kulu riba dha'afa mudha'afa is not referring to compound interest. And also at every instance in the Quran, you'll find wherever interest is being mentioned, it's always the charging of interest that is prohibited. And the third important thing is that today's banking, the way it started off, it is no longer in the same mold. A lot of things have changed, and there are certain things, if they are revised and corrected, then the conventional banking methods can come very clear, very close to what Islam envisages, and you don't need to set up a separate Sharia bank or a separate Islamic bank at all if some of these things are circumvented and some of these things are taken care of. So the next thing which is mentioned, obviously, is also something which is very important, that not only is the fact that they do not charge interest, the next thing is وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. So do not charge interest like this, doubling and tripling it many times over. Fear God so that you are so that you succeed in the hereafter. And وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. Remember, disbelievers are those who intentionally deny the truth. They know what the truth is, but out of arrogance, they stick to denying it, they stick to rejecting it, and that is why they become worthy of such great punishment. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, and remain obedient to God and His Messenger that you earn mercy. Again, something that the Quran often mentions, that if we have to succeed in the hereafter, then the prescription for that is something which God Almighty has sent down on numerous occasions, right from Prophet Adam to Prophet Muhammad. Prophets of God and scriptures have been coming, and at the same time, the Quran, being the final scripture, being in its preserved form, is the one that we have to obey at all cost.
So if this is done, then mercy from God is guaranteed. So iddat lil kafirin is something which is the opposite of that. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And as a result of that, if we are to outdo each other in finding out the will of God and at the same time doing good works, then the Quran says, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum," and run to advance to the forgiveness of your Lord and to paradise, which is as vast as the heavens and the earth, prepared for the righteous who spend in all circumstances. So again, something of an appeal is being made, and this appeal, of course, if you look at the Arabic words, it's a very profound appeal, something that's very emphatic, that you run to the forgiveness of your Lord and to the paradise, which is boundless. In fact, we just cannot imagine that. It is something which is unfathomable, something that you cannot just imagine from your own earthly eyes. And the quality which is mentioned, especially of believers at this instance, is worthy of being noted. It says that they are people they are ones who spend in all circumstances, whether they are in ease or whether they are in discomfort, which means that they don't wait that they have a lot of money to spend. Whatever they have, it could be a few pennies, it could be a couple of $100. I mean, it all depends on what you have. And what you have is something that has come to you and the opportunity comes to you. Then whatever you have is the thing that God would ask you to spend for His cause. Remember, we should not shy away in spending for the cause of God when we have little, because that little might be little to us, but for God it is something that this is more than what we can even think of vis-a-vis our reward in the hereafter. So spending whenever we have, whenever we are in circumstances that we have a lot to spare, and also in circumstances when we are pushed. Even then, these are people who spend. And the next thing which is mentioned is وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, that when they have to refuse someone, they don't show their anger, and they forgive that person. And at the same time, the Quran says, "Wallahu yuhibbul muhsinin," that they are ones who are thorough in their deeds. If they have to refuse someone who has asked for money or maybe some resources, they do it in a very polite way, and they don't throw any tantrum and they don't show any anger. So وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ, and such are they that if they commit a lewd act or do something evil to themselves, remember God and seek forgiveness for their sins. So as soon as they do something lewd, as soon as something vulgar might emanate from them, and they do something which is against the call of justice, against what their own nature would actually vouch for, then فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, they immediately repent before the Almighty. They immediately put themselves before God and ask for His forgiveness. And then it is said, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, and who else but God can forgive sins? And the next thing which is mentioned is even more as something of an eye-opener for people who are believers, for people who are righteous Muslims. It is said, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, they do not deliberately persist on what they have done. So this is like the attitude of a humble person who might fall into sin, who might be lured into sin, and of course that is something that can happen to any person. But they come out of it and they don't insist on it. They don't become bold on it. They don't become audacious on it, and they immediately realize that they have done something wrong. So they say, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." They know that they have to do this and they have to come out of this, and what they have done is not something worthy of being done. And the first thing that they realize, and as soon as they do so, they try to make amends for that. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. It is these who shall be rewarded with forgiveness from their Lord and with orchards beneath which streams will flow. So the concept of paradise which Arabs had would be often on a high ground, like on a mountain, maybe on a plateau, so that any floods that might flow across when there are chances of strong rain, such a orchard would often remain protected. So being on high ground, it would remain protected from any flooding,
And that is why it is said that the orchards that they would love would be placed on high ground, and in the valley around those orchards, the streams would flow. So this should not be in any way lead people to surmise that paradise will have underground rivers, or it's talking about rivers that are below the earth. That's not what it's talking about. It's saying that basically these orchards will be at a great height, and when you look at an orchard at a great height and you look down, you'll find the rivers flowing beneath you. They are flowing. So that is what is being said, and then they'll be staying there forever. This is something which is huge. We just cannot absorb it. That to live in bliss and luxury forever and forever. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, and what a grand reward this is for those who do righteous deeds. Indeed, it is a grand reward, and may God make us worthy of this reward. So with this, we come to an end to today's lesson, and now we can start. Assalamualaikum, Dr. Saleem. I'm here today, so I can help actually. Asad Mirza, please unmute your mic and ask your question. Thank you, Dr. Sahab. A very good lecture on this. Can I ask a question regarding interest? Is that relevant? We're going to stick with the passage today. So yes, so we did discuss first. Yeah, yes, go ahead. okay. Ask the question. Investing in defense savings certificates, mostly the retirees, they have no other option but to invest in a secure way. Is that from the Islamic angle, is that fine? Investing in securities. I mean, like defense savings certificates by the government of Pakistan. So I think that is something that I mean, if you don't have any option, that path should be taken, because although these defense certificates they don't earn interest per se, but if you look at the mechanism on which they work, they are very close to they're like interest-bearing securities, interest-bearing bonds, basically. So they should be avoided as best as we can. And should only be benefited from when you have no other option. For example, in the cases of old people, widows maybe, or elderly people who have no other means of earning. So maybe for them, this should be I mean, under compulsion they can do so, but I mean, normal people who can earn from other means should try to abstain from this. Thank you, Dr. Saleem. Salman Aziz, please unmute your mic and ask your question. तो आपने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा हमारा ये रसूल वगैरह ठीक हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा काइंडली गाइड करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग पर से ठीक है या नहीं? देखिए, जो करंट इस्लामिक बैंकिंग है उसके अंदर तो वही हीलाबाजी करके उसको जो कन्वेंशनल बैंकिंग के बराबर ही रखा गया है. अगर आप उसको स्टडी करें डीपली, सवाए कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कन्वेंशनल बैंकिंग ही को नए नाम से आपने मुतारिफ करवा दिया है. कुछ में से कुछ नई टर्म्स ले ली हैं, मुशारका ले लिया है या आपने मुराबहा ले लिया है, और उसको यूं समझ लें कि नाम तब्दील कर दिए. इस वजह से बजाय से क्या वो रूट इख्तियार करें, उसकी जरूरत नहीं है. अगर आप मौजूदा बैंकिंग के अंदर चंद इस्लाहात कर लें, उन इस्लाहात के नतीजे में जो मौजूदा बैंकिंग है वो बहुत करीब आ जाती है इस्लामिक बैंकिंग के. अलग से किसी बैंक को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया आपको. मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक बैंक का बहुत बड़ा काम होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, यानी जो बिजनेस लोन्स होते हैं. तो वो सारी की सारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो अगर इस बुनियाद पर की जाए जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल सिक्योर्ड है, और अगर कारोबार में नफा हो रहा होगा तो बैंक चार्ज करेगा, लेकिन कारोबार में अगर नुकसान और उसकी कुड़की हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए तो फिर बैंक चार्ज नहीं करेगा. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग. अगर प्रोजेक्ट बेस्ड, और आजकल बहुत सारे ममालिक में अमलन ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी वो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे. दूसरा जो बैंक का बहुत बड़ा काम है, क्रेडिट कार्ड के जरिए से वो आपको सहूलत देते हैं. तो उस क्रेडिट कार्ड पे जब वो जाहिर है लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको से वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो इसको इंटरेस्ट के नाम से मौसूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट को फिर रेट के लिहाज से एडजस्ट करते हैं. उसका दूसरा हल है जो बिल्कुल एक मुनसिफाना हल है, और वो ये है कि जब आप किसी से कोई मुआहदा करते हैं और वो मुआहदा पूरा नहीं करता तो आप उस पर पेनल्टी डाल सकते हैं. तो चुनाचे आप अगर पर्सनल मदद के लिए या यूं समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड लोगों को देते हैं, इशू करते हैं, और क्रेडिट को जब आप आगे बढ़ाते हैं एंड इट्स नॉट रिटर्न एट द राइट टाइम, द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो यू कैन चार्ज अ पेनल्टी ओवर एंड अबव दैट. तो वो उसको पेनल्टी का नाम दें बजाय से आप इंटरेस्ट का नाम दें, वो है असल में पेनल्टी. तीसरी चीज ये है कि आप मॉर्गेज के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बैंक के जरिए से आप घर ले रहे होते हैं, इसी तरीके से आप गाड़ियां ले रहे होते हैं या और बड़े प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं. तो उसमें तो सिरे से इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो असल में उसमें तो एक एसेट आ गया. वो एसेट आपने खरीदा है, उस पर जो आप किस्तें वापस कर रहे हैं, कुछ तो वो इंस्टॉलमेंट्स हैं,
वो खरीद लें, और कुछ उसका असल में किराया है जो अभी तक आप उसके मालिक नहीं बने। उसके बाद एक चौथी चीज सिर्फ रह जाती है जिसमें इस्लाह की जरूरत है, और वो है कंजम्पशन लोन्स, पर्सनल लोन्स। यानी मेरी जरूरत के लिए मैं अगर लोन ले रहा हूँ, तो वो लोन पे है वो सूद लेते हैं आज भी। वो वहां पे अगर वो ये काम कर दें कि वो सूद ना चार्ज करें, और वो जितने भी कंजम्पशन लोन्स दे सकते हैं लोगों को, इस असूल पे कि वो लोन वापस किया जाएगा, उसको वो यानी इसको वेट कर लें, उसको असेस कर लें और फिर दे दें। तो ये चार बातें अगर वो उसको इख्तियार कर लें, तो आपको किसी नई बैंकिंग की जरूरत नहीं है। Thank you, Dr. Saleem. Ahmed, please unmute your mic and ask your question. जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा सवाल सेविंग अकाउंट से मुतालिक है कि सेविंग अकाउंट जी। से मेरे पैसे हैं और उस पे हर महीने प्रॉफिट या मार्कअप लगता है। लेकिन मैंने यही सुना कि ये प्रॉफिट जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सेविंग पे पैसा रखा हुआ है और उस पे आपको हर महीने प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें से अगर पूरा अमाउंट नहीं तो कम से कम कुछ अमाउंट हमें दे देना चाहिए ज़कात के तौर पे। लेकिन फिर मैंने उसमें एक और चीज़ नोटिस की कि उसमें तो जैसे ही प्रॉफिट मार्कअप लगता है, फौरन ही अगले लम्हे विदहोल्डिंग टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है। तो यानी जो ज़कात मुझे उसमें से निकालना चाहिए था, वो तो टैक्स की सूरत में कट रहा है। तो इसका मतलब है कि वो मेरी जो सेविंग्स हैं वो क्लीन हो रही हैं। क्या ये दुरुस्त है मेरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग? उससे ज्यादा देखें, जो ज्यादा अमली तरीका है और ज्यादा रिकमेंडेड है वो ये है कि आपके बैंक स्टेटमेंट जब आप निकलवाएं, वीकली निकलवा सकते हैं या महीने के आखिर में, तो आपके सामने वो जो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे आ रहे होते हैं उसकी अमाउंट आ जाएगी। वो पूरी अमाउंट को आप विड्रॉ कर लें, और उसको ज़कात में तो आप खैर यूज नहीं कर सकते, वो वैसे एक सदके के तौर पे आप दे दें, चैरिटी के तौर पे दे दें। ज़कात उसमें एक लायबिलिटी है क्लीन मनी से जो आपने देनी है। तो सेविंग्स अकाउंट की जो पैसे हैं वो तो सूद है, तो उस सूद में जो भी आपके पास अमाउंट आ रही है बस उसको विड्रॉ कर लें और कहीं चैरिटी में दे दें। लेकिन वो ज़कात में मिनहा नहीं होगी। वो ऐसे ही है कि सोसाइटी से जबरन वसूल की गई थी और आपने वो सोसाइटी को वापस कर दी। तो उसका तो एक चैनल बना हुआ है कि जहां कोशिश करें कि आप करंट अकाउंट खोलें। अगर करंट अकाउंट नहीं खुल सकता, मजबूरन सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो जस्ट विड्रॉ दैट मनी दैट यू गेट एज मार्कअप एंड जस्ट गिव इट अवे। अच्छा, लेकिन Thank you, डॉक्टर Dr. साहब, Saleem. रुपी डिवैल्यू भी तो होता है ना, अगर मैं हाँ जी, उसको उसमें से जी, कुछ तो ड्रॉ ना वो कर करूंगी तो सकते हैं मेरा तो जी नुकसान आप। है। जी। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है अपने सेविंग्स में, तो वो बिल्कुल ठीक है। यानी देखिए, हर महीने और हर साल सेविंग्स जो है, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो बैंक्स डिक्लेयर करते हैं। तो वो अगर आपका जो इंटरेस्ट का रेट है और इन्फ्लेशन का रेट लेट से बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कम है, तो उतना आपने देना है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो फिर आपको कुछ नहीं देना। Thank you, Dr. Saleem. Naim, please unmute your mic and ask your question. डॉक्टर साहब, ये अभी जो आपने लास्ट बात की, इसमें अमूमन ये होता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज द काइबोर लेट्स से इज ऑलवेज a little lower than the inflation rate, otherwise the banks don't Correct. make any money. So if जी for बिल्कुल। example one goes into a money market instrument with let's say a mutual fund, then obviously you would be earning lesser than the inflation, so that should be kosher, right? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, मतलब जैसे आपने खुद कहा कि आमतौर से वो बैंक्स कम ही रखते हैं अपनी इंटरेस्ट रेट को, वरना वो कमा नहीं सकेंगे। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो कम होता है, ऐसा ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Rehan Khan, please unmute your mic and ask your question. मेरा सवाल ये था, अभी पिछले थोड़ी देर पहले एक साहब ने सवाल किया था रिगार्डिंग सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। देखिए, उसमें आपने कहा कि ये सूद के करीब है। मुझे थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके देंगे कि क्यों कर ये सूद के करीब है। बेसिकली गवर्नमेंट जो सेविंग्स लोगों की लेती है वो अपने मकासद के लिए खर्च करती है, जो फलाह आमा मफाद आमा के मकासद होते हैं उसमें खर्च करती है, और वो कहीं लेंड नहीं करती उसको किसी सूद बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में। दूसरी चीज जो रिटर्न करती है वो परचेजिंग पावर पैरिटी को रिटर्न करती है। मींस कि अगर आपने 1 लाख रुपए दिया तो साल बाद वो आपको मेक श्योर करता है कि जो उस वक्त परचेजिंग पावर थी वो उसको रिटर्न करे। सो वो उतना मार्कअप ऐड करके रिटर्न करते हैं। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। देखिए, दो चीजें, ये जो दूसरी आपने बात की, तो मैं अभी आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां पे परचेजिंग पावर को उन्होंने इक्वल करना है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, वो तो यानी दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वो तो आप आम सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट में भी कर सकते हैं, और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी कर सकते हैं। जो पहली बात है कि सूद के ये करीब है, वो यही है कि बेसिकली देखिए, वो आप जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को उधार देते हैं। गवर्नमेंट आगे क्या करती है आगे, ये एक अलग मामला है। तो इंटरेस्ट हमेशा उधार पे होता है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता। हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा है।
वो जो भी करे, चाहे इन्वेस्टमेंट करे, चाहे लोन दे, चाहे सिक्योरिटीज में कुछ खरीदे, चाहे रेंट पे प्रॉपर्टी ले, वो उसका काम है। हमें उसने असल में, हम उसको कहते हैं कि ये मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, इसका मतलब है ये मेरा ओरिजिनल अमाउंट ये महफूज है, आप अपनी मर्जी से वापस कर दें। तो एक जो फर्क है वो सिर्फ ये होता है कि जो कर्ज देने वाला होता है वो अपनी शर्त से कहता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे तो एक आम शहरी ये डिमांड नहीं कर सकता, वो तो जो भी गवर्नमेंट देगी वो उसको वसूल कर लेगा। तो इस वजह से ये इंटरेस्ट पर से तो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पर से में तो मैं अगर देने वाला हूं तो मैं कहूंगा जी मैं आपको इतना दे रहा हूं और मैं आपसे इतना वसूल करूंगा। इस केस में ये होता है कि आप दे तो रहे होते हैं एज लोन, लेकिन वसूल आप वही कर रहे होते हैं जो गवर्नमेंट, अगर वो कह देगी जी मैं 12% दे रहा हूं तो आप मजबूरन 12% लेंगे, वो कहेगी जी मैं 13 आप लेंगे, कल को कहती 9 तो आप 9 लेंगे। तो वो वेरिएशन तो गवर्नमेंट कर सकती है, इस वजह से वो इस पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि लेवरेज आ जाती है। लेकिन चूंकि आप खुद लोन दे रहे हैं और इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट दैट यू अर्न ऑन अ लोन। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक अलग बात है, हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते, वरना तो पैसे डूबने का खतरा होगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें रूह पाई जाती है सूद की। नहीं, लेकिन Thank you, अगर Dr. गेटिंग Saleem. पावर पैरिटी, सॉरी टू, मैं इसी में क्लैरिटी Can I move to the next question, please? I have a आप couple ऐसा of hands. कीजिएगा, मेरा नंबर ले लें, आप पर्सनली मुझसे हम डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये मामला। Mazala Abdullah, please unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आधा आंसर जो है वो तो अभी मुझसे पहले जो थे उन्होंने तकरीबन कही है। हमारे पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड, तो मेरे फादर ने इसी तरह से गवर्नमेंट नेशनल सेविंग स्कीम में अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, लेकिन मेरी मदर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो 82 85 उनकी एज है, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड ना, तो वो क्या करें? आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है उनको आप ये बताएं कि उनकी एज में और उनकी सिचुएशन में ये एक कंपल्शन के तौर पे, एक मजबूरी के तौर पे, और कोई ज़ाहिर है अगर उनके पास जरिया नहीं है, अगर वो इससे फायदा उठाते हैं तो उम्मीद है अल्लाह ताला इसमें दरगुजर करेंगे। क्योंकि देखिए, या तो हमारे मुल्क में कोई एवेन्यूज होते हैं जिसमें आप सेफली कहीं इन्वेस्टमेंट करें और आपको वो कोई सेफ रिटर्न आ जाए, यहाँ तो जाहिर है ऐसा पॉसिबल नहीं है, उल्टा वो पैसे डूब जाते हैं। तो और जाहिर है कि एल्डरली लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए। तो इस वक्त हमारे मुल्क में भी नहीं, बल्कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। यानी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो एक मुस्तकिल इनकम के लिए देयर इज नो वे आउट। तो अनलेस समथिंग हैपेंस इन दैट रिगार्ड, अगर वो ये इससे फायदा उठा लेती हैं तो एक मजबूरी के तौर पर फायदा उठाने में शायद ये काउंट होगा, और उम्मीद अल्लाह ताला दरगुजर करेंगे। Nadia, please ask your question. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यूएस के हवाले से बात करना, आई थिंक मैंने ये आपसे शायद पहले भी पूछा था, लेकिन मैं आपकी डिस्कशन से कंफ्यूज हो गई हूँ। सो 401k और IRA, सिंपल IRA, दे आर बेसिकली कंसिडर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? बिकॉज उसमें आपका यू पुट परसेंटेज ऑफ मनी, एम्प्लॉयर मैचेस योर percentage and then it grows over the period of time. So will that be considered under investments? ये देखिए, आपको मैं सादा बात बताता हूँ, ये उसके बाद तो ये हर बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके आप इस पे वो यू कैन अप्लाई। यानी either you are lending something or you are investing something. Lending का मतलब ये होता है कि your original amount is always secure and you'll be returned that. So whenever you loan something or you give it on loan, anything which you earn over and above a loan is interest. Other than that, if you are investing something, which means that investment that can grow, it can be reduced, and it can just go away as well. So you are basically, तो वो investment कभी भी interest earn नहीं करती, वो फिर जो भी उसके ऊपर आएगा वो profit होता है। Yeah, there's a simple IRA, 401k. Simple है. There are just two types. यानी either it's an investment or a loan. Whenever you give a loan, whatever you earn over and above a loan is classified as riba and interest. And when you are investing something, so that is not riba. That is a profit that you earn. Okay. Thank you, Dr. Saleem. Imran Khan, please ask your question, and this will be the last question for today. Thank you. Assalamu alaikum, sir. My question pertains to the provident fund of the government employees कि जो वो provident fund करता है या GP fund जिसको आप कहते हैं, वो उसके ऊपर वो जमा कराते हैं पूरी सर्विस में, गवर्नमेंट उसको एंड में उनको प्रॉफिट देती रहती है एनुअल, और उसके बाद टोटल उनको रिटर्न करती है। तो इज इट आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ सूद? नहीं, सूद तो नहीं, सो आप कह सकते हैं। देखिए, वो प्रोविडेंट फंड में तो आपने अपने पैसे दिए हुए हैं और गवर्नमेंट उसको मैच करती है और फिर आगे इन्वेस्ट करती है। अब वो क्या करती है, वो उनका बिजनेस है। आपको तो वो ये कहती है कि भाई वी विल द अमाउंट दैट यू विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी
every month will be accumulated, and they will add certain amount to it and then invest that and maybe give you at the time of your retirement, yeah, at the termination of your employment. तो इसको नहीं आप सूद कह सकते. Okay, thank you everyone. Thank you for a wonderful session, Dr. Saleem, and inshallah we'll see everybody tomorrow. Khuda Hafiz.